Just a minute. Okay, so welcome back to Data Structures Theory session. Good noon. And let us continue with the second unit. I hope that your mid exams gone well. बाकी तो जैसे पेपर चेक होंगे पता चल जाएगा. But I hope that you have done well in your mid 1 exams. A minimum course where you can cover more marks, right? Now, when your second mid comes, almost full syllabus will be there. So, sorry? No. Mid 1 syllabus will not be covered inside mid 2. But if mid 1 is smaller, then mid 2 is obviously larger. Okay. Well, let's continue with the second unit that we are going through. We started with array, then stack. We've implemented stack, and just before your examination, mid exams, we have started queue. Let's very quickly go through the revision. What is queue? Well, queue is nothing but ordered list of your homogeneous data. Where you have both the ends open, you insert from one end, delete from the other one. So generally we insert at rear and delete from the front. And that's what the simple queue is. अगर कोई टिकट लेने जाता है तो लास्ट में खड़ा रहेगा. सबसे पहली टिकट उसको मिलेगी जो पहले आया था. So it is first come, first serve, first in, first out. Now how can we implement queue in a program? So to store your data, you need an array. And to remember front and rear positions, we need two more variables, f and r. So combinedly these three, data, front and rear, combinedly these three are going to give you one queue. So we create a structure which has three members inside, one data array, two simple variables to store front, rear, index values, and so on. This is how we create a queue. Now, similar kind of way we have already created stack. So you can relate this entire process, I'm saying entire process, with that program. जैसे stack define किया वैसे ही आप queue define कर सकते हो, right? And then you go for number of operations. Just like stack के अंदर आपके पास init, push, pop, pip, change, display, ये सारे operations थे. Similarly here in queue you have init, insert, delete, pick, display is empty, is full operations. Now insert is also called enqueue. Delete can also be called dequeue. So enqueue and dequeue operation are nothing but insert and delete. But dequeue word has been deprecated now because double-ended queue is also called dequeue. तो अगर कोई dequeue बोलता है तो फिर confusion होगा. Delete करूँ या double-ended queue लूँ? क्या? Right? And that's the reason dequeue word for delete operation has been deprecated. Very rarely it is being used. Generally we call insert and delete. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए at any point of time अगर simple queue के साथ dequeue बोला है तो it is delete operation, right? We have also gone for few operations like init. When you declare your queue first time, it is empty. अगर पूरा queue खाली है, एक भी value नहीं है, तो what will be your front and rear? कुछ नहीं. अगर कोई value ही नहीं है, तो front rear भी नहीं है. So at that time, what we can say, oh, we initialize front and rear with -1. Negative index is not possible. So that indicates my queue is right now empty. Then we go for insert and delete operations. Insert operation will always be done at rear place. तो जब भी आप insert करोगे तो आपका rear update होगा. Delete operation will always be done from the front. तो जब आप delete करोगे तो front update होगा. इतना याद रखो.
Now additionally, we have discussed that dialogue of a movie, which was that हम जहाँ खड़े रहते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है. So something like that here. When you have a first value inside a queue, पहली वैल्यू जब आप क्यू में डालोगे तो वो बोलेगा कि यहां से लाइन शुरू होगी, दैट इज माई फ्रंट. सो एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू अपडेट योर फ्रंट वैल्यू ऑल्सो. कब? जब पहली वैल्यू आएगी. उसके बाद कितनी भी वैल्यूज आप डाल दो, फ्रंट अपडेट नहीं होगा, ओनली रियर. सो फॉर दैट वी हैव कंडीशन हियर, इफ योर फ्रंट एंड रियर बोथ आर -1, इसका मतलब एक भी वैल्यू है ही नहीं आपके क्यू के अंदर, तो जो इंसर्ट कर रहे हो दैट इज गोना बी योर फर्स्ट वैल्यू. सो अगर अभी आप इंसर्ट कर रहे हो, फ्रंट रियर दोनों -1 है, तो आप दोनों को 0 करोगे. अदरवाइज वी सिंपली इंक्रीज आवर रियर पोजिशन बाय 1 एंड देन वी स्टोर द वैल्यू एट रियर प्लेस. सो वी इंसर्ट 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 इंसर्ट. कितना इंसर्ट करोगे आप? कभी ना कभी तो आपका क्यू फुल हो जाएगा. सो वी ऑल्सो नीड टू चेक वेदर माई क्यू हैज some space to store a value or not. And to check it, we have overflow condition. We have overflow condition. Now generally we focus on this part only. If your rear is max -1, then you say your queue is full. If your rear is max -1, then your queue is full. Front की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. Right now we are not focusing on this part because we are talking about simple queue. Okay, so in a simple queue, rear is max -1, then it is full. अगर वो full है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, overflow message दे दो and done. So that entire process gives you this algorithm. So if your rear is max -1, overflow and return. Otherwise you go further and you check if your front and rear both are -1, then make it 0. Otherwise you simply increase your rear and then you store your value. A very simple process for inserting a value in simple queue. ये हो गया insert operation. Then delete. How do we delete it? So delete operation will always be performed on front. आगे से ही delete होगा, तो front plus plus करेंगे. Right? What we are gonna do here is we take a data from front and then we increase our front and we return the value. So आप delete 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 कब तक delete कर पाओगे? अगर कोई वैल्यू है ही नहीं तो delete क्या करूं? And that is called underflow condition. Now how do we check whether our queue is empty or not? So if your front is -1, that's the initialization condition. जब हमने init किया तो front को -1 सेट किया था, and that indicates your queue is empty. So एक condition हमें मिला कि अगर front -1 है तो मेरा queue खाली है. But that was the initialization condition. जब मैंने इनिशियलाइज किया तब की ये कंडीशन थी. मान लो कि आपने 4 वैल्यू इंसर्ट की, तो फ्रंट रियर 0 कर दिए पहली बार, एंड बाकी की हर बार आपने क्या किया, R++. सो रियर -1 से 0 पे आया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 पे आके अटक गया. 4 वैल्यू इंसर्ट करी तो रियर विल बी पॉइंटिंग टू 3. फ्रंट इज 0, तो आप 4 वैल्यू डिलीट भी कर पाओगे. पहली वैल्यू डिलीट करो तो फ्रंट ++, दूसरी वैल्यू डिलीट करो फ्रंट ++, तीसरी वैल्यू डिलीट करो फ्रंट ++. तो फ्रंट ++ होता है. फ्रंट विल गो फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. And at that time your front will become greater than rear. 4 वैल्यू डाल के 4 वैल्यू डिलीट कर दो तो आपका फ्रंट जो है वो रियर से बड़ा हो जाएगा. एंड दैट्स द नेक्स्ट कंडीशन
whether your queue is empty or not. अब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है. Both are not necessary, any one can happen. So we go for or condition here. If your front is -1 or your front is greater than rear, then we say queue is empty, nothing to delete. And that gives you the delete algorithm. Okay, that gives you the delete algorithm. So what we do, we first check if front is -1 or maybe front is greater than rear, then queue underflow and we return. अगर खाली नहीं है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा. We take a value from front, then we increase our front and we return that value. That's the delete operation. Now what happens here, अगर आपकी queue की size 5 है, consider the queue size is 5, you've inserted 5 values, then it's gonna be something like, let's say you have total 5 elements inside your queue, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, and along with that you are maintaining front and rear. Initially both will be pointing to what? -1. Now this is your initialization stage. Both are pointing to -1. Now जैसे ही आप पहली value insert करोगे, when you go to insert a first value, then what you'll do is you'll make both these 0. पहली value जब भी insert करते हो दोनों को 0 करते हैं. And then further insert operation will only update your rear. आप आगे जितने भी insert करोगे तो only rear update होगा. Rear will always be pointing to the last value of your queue. Last value जहां पे भी है rear वहां पे रहेगा. Now this is our current status of queue and this is full. Our queue is full right now. ठीक है. Now we started deleting our values. So जैसे ही मैं delete करता हूँ 2 को, I'll update my front. When I delete 3, I'm going to update my front. When I delete 4, I'll also update my front. I delete 5, I'm going to update my front. And when I delete 6, I will update my front which will be pointing to 5. So front is greater than rear now and our queue is empty. So I can say, okay, my queue is empty right now. Now this is the current status of your queue. Rear is 4, front is 5. आपकी queue खाली है. You are not able to insert any value now. What is rear? What is R? 4. What is the value of R? 4. It is max -1. 5 is your size. 5 minus 1 is 4. Rear is still pointing to 4th index. Insert operation क्या करेगा? Overflow condition check करेगा and it will say, oh, rear is max -1. Your queue is full. Now this is the limitation of simple queue. सिंपल क्यू को अगर आपने एक बार यूज कर लिया पूरा तो क्या बाद में दूसरी बार यूज नहीं कर पाओगे उसको. दैट इज द लिमिटेशन ऑफ सिंपल क्यू. नाउ यू कैन मॉडिफाई अ लिटिल बिट हियर. डिलीट ऑपरेशन जो है उसको छोटा सा मॉडिफिकेशन दे दो तो आप सिंपल क्यू को मॉडिफाइड क्यू बोल के सेम वापस यूज कर सकते हो. नाउ व्हाट हैपेंस when your front becomes greater than rear, you say your queue is empty. At that time, अगर आप वो दोनों को वापस initial condition पे लेके आओ तो फिर से यूज कर पाओगे.
जब लास्ट वैल्यू को आप डिलीट करते हो तो आपका क्यू खाली हो जाता है, एंड एट दैट टाइम इफ यू मेक फ्रंट रियर बोथ पॉइंटिंग टू -1 तो आप इसको रीयूज कर पाओगे, एंड दैट्स व्हाट द मॉडिफाइड क्यू डिलीट ऑपरेशन कैन बी. Instead of simply updating front plus plus, based on a condition, we make front and rear both pointing to -1. कब करोगे? When your front and rear both are equal, एक ही वैल्यू है, उसी को अगर डिलीट करोगे then your queue becomes empty. If it is empty, make front rear -1, otherwise front plus plus. So this will allow you to use your queue again and again. So that is called modified simple queue. But still, anyone asks you what is the limitation of simple queue, तो एक तो limitation ये हो गया कि एक बार आपने पूरा queue use किया तो दूसरी बार use नहीं कर पाओगे. You have to modify a little bit delete operation. That is one limitation. There is one more limitation, we will discuss it later. So that's what the delete operation is. Now the next part we are going to cover now, pick operation. And pick operation is just going to give you the front value. It will not delete it. वो front value देगा लेकिन delete नहीं करेगा. So if you have your queue something like whatever size you have, okay, if your front is pointing to 2, if your rear is maybe pointing to 5, and you have some data inside, let's say, so pick operation is going to give you the front value only. So how can you have a front value? From your data, you take the front value, Q points to front, and then you return that value. That's it. Now actually delete operation में हम क्या करते थे? Front plus plus करते थे. पूरा delete operation उठा लो, front plus plus निकाल दो. That will be your pick operation. Simple. Front plus plus नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा pick operation. Just like stack के अंदर आपने pop और pip में difference क्या था? Top minus minus हटा दिया तो pip मिल गया. Same way here, front plus plus निकाल देंगे तो pick मिल जाएगा. The same algorithm. We can check whether our queue is empty or not. If it is not empty तो हम front value लेके return कर देंगे and we are done. Take the front value, return that value, your process is over. So that is pick operation. We have seen init, insert, delete, pick. Is empty, is full भी देख लिया. What is this? Underflow condition. Underflow मतलब stack खाली है या नहीं? Sorry, queue खाली है या नहीं? So this is empty. Instead of printing or writing a message, you return 1 or return 0. अगर खाली है तो return 1, else return 0. Insert operation gives you is full. Overflow condition, right? तो फिर से लिस्ट बनाओ. init, insert, delete, pick, is empty, is full. इतने हो गए. Let us talk about display operation. A very simple one. Q को डिस्प्ले करना है तो एकदम आसान.
let us assume you have few values like this one. Then your front will be pointing to the first value, rear will be pointing to the last value, and indexes will be something like 0, 1, 2, 3, and 4. Now, whenever we want to print a queue, we always print it in a forward manner. जो पहले आया पहले प्रिंट करोगे, लास्ट में आया लास्ट में प्रिंट करोगे. A forward manner printing. Well, in that case, it becomes very simple. आप सिंपल एक for लूप चलाओगे. अगर फॉरवर्ड लूप है तो i प्लस प्लस, बैकवर्ड लूप है तो माइनस माइनस, and you are simply going to print your data of I, right? You are going to print data of I. Now what I should be? फ्रंट से लेके रियर तक चलना है. सो I is equals to front, I is less than equals to rear, rear तक जाना है हमें. So I is equals to front, I less than equals to rear, I plus plus, print data of I. Very simple. The display operation. आप डिस्प्ले करने से पहले आप चेक कर सकते हो आपकी क्यू अगर खाली है तो अलग से मैसेज दे दो. सो अंडरफ्लो या क्यू इज एम्प्टी ऐसा मैसेज अलग से दे सकते हो. अगर वो एम्प्टी नहीं है देन यू कैन गो फॉर दिस लूप where you can say Q contains and then all the numbers. So very simple. Display operation is very easy in Q because it goes in a forward manner. Now the only one operation remains, that's the change operation. How about change in simple Q? It's kind of एक घंटे से आप टिकट विंडो की लाइन में खड़े हो, आपका फ्रेंड आएगा तो क्या बोलोगे? अब तू खड़ा रहे, मैं निकल जाऊंगा. लेकिन आपका फ्रेंड कहाँ खड़ा रहेगा? आप ही की जगह पे खड़ा रहेगा. वो लास्ट में नहीं जाएगा, पहले भी नहीं जाएगा. नो वन इज गोइंग टू अलाउ हिम टू स्टैंड फर्स्ट. लास्ट में वो जाएगा नहीं, भाई मैं लास्ट में क्यों जाऊं? यू आर चेंजिंग योर प्लेस विथ योर फ्रेंड्स. मीन्स वहीं पे आपका फ्रेंड खड़ा रहेगा. Now this kind of scenarios will happen very rarely in terms of computer, but still it may happen, and that's why we write change operation. वरना change allowed नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोसेस पहले आया तो उसको हटा के आप दूसरी प्रोसेस कर लोगे. हाँ, अगर प्रायोरिटी हायर है तो वो प्रोसेस पहले होगी, बट फॉर दैट वी हैव अ प्रायोरिटी क्यू. वो बाद में देखेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस समथिंग. एनीवे, इफ देर इज अ नीड टू रिप्लेस समथिंग देन वी हैव द चेंज ऑपरेशन. हाउ डू वी डू इट? स्टैक के लिए चेंज ऑपरेशन याद है? क्या किया था वहां पे हमने? यूजर इज गोइंग टू गिव यू द पोजीशन, बट वी वर्क विथ इंडेक्सेस. तो पोजीशन को इंडेक्स में कन्वर्ट किया था, राइट? अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस वी हैव टू डू हियर आल्सो. अगर आपके पास एक क्यू है, okay, and let us assume we have few values inside. Then the current front will be pointing to 2 and the rear will be pointing to 4. Now let us assume this is our current status of the queue. But if this is the current status, तो user के लिए position हो जाएगा 1, 2 and 3. User is always going to give you the position, but for that position we have to convert it to index like 2, 3 and 4. Position 1 is index 2, position 2 is index 3 and so on. तो जैसे हमने स्टैक के अंदर
पोजीशन टू इंडेक्स कन्वर्जन किया था, वी नीड दैट काइंड ऑफ इक्वेशन हियर ऑल्सो. Okay, we need to calculate index based on position. Now tell me what this equation can be. यहाँ पे क्या हो सकता है? Just for your reference, अगर मैं stack की बात करूं तो it was IDX equals to top minus pose plus 1, ये था. So कुछ इस तरह से यहाँ पे भी एक इक्वेशन बनना चाहिए. Okay, you are saying that rear minus position plus 1. Any other suggestion? Think about it. क्या कर सकते हो? Well, whatever you think, try to evaluate it. Rear minus pose plus 1. Will it happen properly or will it work properly? What is rear? Rear is 4. मान लो कि मुझे पहली पोजीशन चेंज करनी है. So POS 1 plus 1. 4 minus 1 is 3. 3 plus 1 is 4. Index 4 मिला. Position 1 के लिए index क्या होना चाहिए? 2. So this will not work. पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रंट से. So your index calculation must depend on front, not rear. Rear तो जितना भी है पोजीशन बढ़ता जाएगा. I don't have any problem with that. Right? So your equation will depend on front and position. अब सोचो. Okay, front minus pose plus 1. What is your front? 2. मान लो कि पहली पोजीशन चेंज करनी है तो -1 plus 1. आंसर मिला 2. That doesn't mean it is equal. It is correct. Let's think about third position. Front is 2. I want to change third position. Plus 1. इंडेक्स क्या आना चाहिए? थर्ड पोजीशन इंडेक्स क्या आना चाहिए? 4. So this is not a correct equation. Yeah, now comes few suggestions from online students. Front plus position minus 1. फ्रंट जहां पे भी है वहां से आपकी पोजीशन स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. सो ऑब्वियसली इट्स गोना बी फ्रंट प्लस सम पोजीशन. फ्रंट इज योर बेस और वहां से आप आगे बढ़ते हो 1 2 3 4. सो प्लस आगे बढ़ना है तो प्लस गिवन पोजीशन. सो फ्रंट प्लस पोजीशन. अब पोजीशन 1 से स्टार्ट होती है. फ्रंट जो है हमारा इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होता है. सो टू कंपनसेट दैट थिंग वी हैव -1 more, -1 here. So front plus position -1. Let's test it out. Front is what? 2. अगर फर्स्ट पोजीशन मुझे चाहिए then it is going to give me 2. That's valid. मान लो कि थर्ड पोजीशन आपको चेंज करना है तो it's true, right? So actually this equation is the perfect one. Front plus position -1 will give you the index, and once you have the index, what you can do,
is you can update your data at particular index. You can assign a new value there. नई वैल्यू को वहां पे डाल दो. But we never rely on the input given by user. यूजर मेरे जैसा हो सकता है, यूजर आपके जैसा भी हो सकता है. वो तो कोई भी पोजीशन देगा, हम क्या करेंगे? So before we update our data, we need to validate the calculated index. जो भी इंडेक्स आपने कैलकुलेट किया है उसको वैलिडेट करो whether it is proper number or not. जो डेटा आपके पास है आप उसी को अपडेट कर सकते हो. आपके पास डेटा कहाँ से कहाँ तक का है? फ्रंट से रियर तक का. So calculated index must be within the range of your front and rear. Your calculated index must be greater equals to front, less than equals to rear. Only then you can say, okay, calculated index is valid and I'm going to update that data. अगर index इसके अलावा कहीं पे भी जाती है, then we'll say given position is not a valid position. Message. Okay. So that's your change operation. Here is your change algorithm. चेंज करने जाते हो सबसे पहले आप अंडरफ्लो चेक कर सकते हो. अगर क्यू खाली है तो चेंज करने के लिए कुछ है ही नहीं. राइट. सो व्हाट वी कैन से इज underflow is empty condition, front is -1, front is greater than rear, we say queue is empty and we simply return. If your queue is not empty, then based on a given position you are going to calculate the index, front plus position -1, and then you are going to validate that index. Your index must be greater equals to front, must be less than equals to rear. That's the valid range. अगर ऐसा है then we are going to update the value, else we will print the message and over. So this is your change operation. Change in a simple queue. So now actually we are done with all possible operations on simple queue. In it, insert, delete, pick, change, display, is empty, is full. So the very next step comes is implement a simple queue. जैसे हमने स्टैक बनाया था सेम उसी तरह से आपको ये क्यू बनाना है. We have implemented stack as an abstract data type, टाइप डेफ करके. तो आप यहाँ पे भी वही करोगे, टाइप डेफ करके यू विल इंप्लीमेंट क्यू एज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. देन यू आर हैविंग पुश, पॉप, पीप, चेंज, डिस्प्ले, ऑल दोज ऑपरेशंस. तो यहाँ पे भी आपके पास है इंसर्ट, डिलीट, पिक, डिस्प्ले, चेंज ऑपरेशंस. सारे ऑपरेशन के लिए एल्गोरिथम चाहिए, यू हैव इट. Now to demonstrate your queue, you need menu driven program. तो जैसे स्टैक के लिए हमने menu driven program बनाया था, same skeleton you can use here. printf में push, pop, pip लिखा है तो यहाँ पे insert, delete, pick लिख दो. स्विच केस के अंदर आपने जो फंक्शन कॉल किए हैं वो बदल दो. पुश की जगह पे इंसर्ट कॉल करोगे, पॉप की जगह पे डिलीट कॉल करोगे, पिप की जगह पे पिक कॉल करोगे, एंड सो ऑन. स्टैक का वेरिएबल लिया, उसकी जगह पे क्यू का वेरिएबल ले लो. बट दैट्स हाउ यू डेमोन्स्ट्रेट योर क्यू विद अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम. दैट्स व्हाई आई विल से दैट दिस इज योर टेक अवे task. I am not going to implement it right now here. Now it's your takeaway task. Whenever you have a time, you implement simple queue, just like a stack. Anyway, you are going to implement it because it is actually part of your practical list.
पांचवा प्रोग्राम जो है वो सिंपल क्यू इम्प्लीमेंट करने के लिए यही है. सो कैसे भी करके आप इम्प्लीमेंट करोगे ही करोगे, बट दैट्स अप टू यू when you will do that. So here we complete a simple queue. अगर easiest question पूछना हो तो ये रहा. सिंपल क्यू पे कुछ इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन करके दिखाओ क्यू कैसा रहेगा. बाकी कोई भी एल्गोरिदम पूछ सकते हैं. Write insert algorithm of a simple queue, write delete algorithm or NQ DQ algorithm of a simple queue, change operation on a simple queue. So operations, algorithms we have seen. But as I told you, there is one more limitation of a simple queue, and we'll cover it later. Now this is the time to cover that limitation. This is the time to cover that second limitation. Let us have a look at this process, and then you will understand what is the problem with simple queue. So it says you have a simple queue of size 5. So well, you have index 0, 1, 2, 3 and 4. You have an array of 5 elements. And for the first time when you take this queue, you will say your front is -1, your rear is also -1. Init operation. Now that's the initialization or the initial status. Then it says perform below operations, and the first one is the insert 5. सबसे पहला ऑपरेशन है insert 5. Recall the insert algorithm. जहां पे हम खड़े रहते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, तो फ्रंट अपडेट करना पड़ेगा, वरना R++. वेल ये तो पहला वैल्यू है. So in that case we are going to update front and rear both, and we are going to make it 0. Now you can say wherever your rear is pointing to, store your value. So rear is 0, तो 0th place पे मैं अपनी वैल्यू 5 को स्टोर कर दूंगा. So I'll store 5 as a first element, and that's my first insert operation. Now next it says okay, insert 6. Now this is not a first value, so we only focus on rear now. क्या करेंगे? We'll go for rear ++, and wherever your rear is pointing to, you store your data. rear जहाँ पे भी point करे वहाँ पे अपना data store कर लो. Well, 5 was already there and front was 0, तो वो ऐसे ही रहेगा, no change there. Then it says insert 7. Okay, one more insert. We are going to update the rear place, और rear जहाँ पे भी point करेगा वहाँ पे मैं 7 को store करूँगा. Remaining everything will remain as it is, no change there. So that's the current status of your queue after 3 insert operations. Well, later it says go for delete. अब delete का algorithm याद करो. It says you take value from front. पहले तो आप front से value उठा लो. So we are going to take a value from front. 5 मिल जाएगा हमें. And then it says you increase your front. So you are going to increase your front. Make it 1. Rear is as it is and values are as it is. Front ++ हो गया, तो front is pointing to index 1, मतलब value 6. अब आपके पास 6, 7 दो ही वैल्यू है, 5 deleted. Okay, let's go for next operation. Insert 8. Update your rear and store your data at that index. बाकी जो भी है no change.
Then it says insert 9. Okay, update your rear and store your data at that place. बाकी जो भी है as it is. Then it says delete. Well, you delete a value from front, so 6 will be deleted and front will be updated. The front becomes 2. No change in the remaining part. Okay, so this is what your current status is. Front is equals to 2, rear is equals to 4, and you have 3 values inside your queue. आपके पास 3 वैल्यू है अंदर, बाकी 2 एलिमेंट खाली है. And now it says insert 10. What will happen? What will happen? Rear is 4, which is actually max minus 1. So this operation will tell you overflow message. The last insert 10 operation will tell you overflow message. जबकि आप बोलोगे सर हमारे पास 2 एलिमेंट एरे के अंदर खाली हैं, I do have empty space, but still सिंपल क्यू ये बोलेगा कि भाई क्यू खाली नहीं है, क्यू पूरा भर गया, क्यू इज फुल, क्यू ओवरफ्लो. एंड दैट्स द limitation of simple queue. That's the limitation of simple queue. सिंपल क्यू में अगर आगे आपके पास कोई भी एलिमेंट खाली है फिर भी आप उसको यूज नहीं कर पाओगे. अगर मॉडिफाइड क्यू बनाया फिर भी आप यूज नहीं कर पाओगे. मॉडिफाइड क्यू तो सिर्फ आपको एक ही बेनिफिट देता है. व्हेन योर क्यू बिकम्स एम्प्टी यू री इनिशियलाइज इट. खाली होगा तो -1 पे जाएगा, बाकी तो जो है ऐसे ही है. सो इवन मॉडिफाइड क्यू is not going to solve this problem, right? So what is this problem? A simple queue. Inside a simple queue, even if you have empty elements at front, you cannot use it. आपके पास खाली एलिमेंट आगे की जगह में है, आगे की प्लेस में है, फिर भी आप उसको यूज नहीं कर पाओगे. Right? And to overcome this problem, we have a circular queue. To overcome that problem, we have a circular queue. Now let us try to understand how circular queue looks. अब circular manner है, पक्का कहीं ना कहीं तो सर्कल बनेगा. Consider this as a circle. Okay, and we have size 5 array. Look, I'm still saying array. So ये जो सर्कल हम बनाते हैं, this is just to understand, it is just to represent a circular queue. बाकी जब आप कोड लिखोगे तो प्रोग्राम के अंदर तो आपका एक लीनियर एरे ही रहने वाला है. 0 1 2 3 and 4. Inside your memory it is going to be your array, continuous memory allocation, linear manner. तो फिर ये लीनियर एरे को सर्कुलर एरे हम कैसे मतलब यूज कैसे करेंगे? Now it is only that we are going to maintain our operations. कौन से ऑपरेशन? इंसर्ट, डिलीट, जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हम इस तरह से करेंगे कि वो सर्कल जैसे बिहेव करे. आपका लीनियर एरे शुड बिहेव लाइक अ सर्कल एरे.
So generally in a linear part, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि anyway you are going to store your data in some data array, and every queue will have front and rear, right? So whether you take simple queue or you take circular queue, okay, whether you take simple queue or circular queue, structure is same, no change there. सिंपल क्यू हो या सर्कुलर क्यू हो, 3 मेंबर रहेंगे, एक डेटा एरे, 2 पॉइंट मीन्स फ्रंट एंड रियर. बट नाउ आई एम सेइंग दिस इज अ सर्कुलर क्यू, सी क्यू. So when I define my circular queue, I am going to also define its operations. सिंपल क्यू के साथ जो ऑपरेशन लिखे वैसे ही आप सर्कुलर क्यू के साथ भी ऑपरेशन लिखोगे. And when you define those operations, you are going to maintain your front and rear such a way that it behaves in a circular manner. तो linear में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 and so on, linear जाता है, right? But in a circle manner, what we do, 0 1 2 3 4 and then we come back to 0. That's what we want to change. तो जब सिंपल क्यू के अंदर मैंने r प्लस प्लस आर प्लस प्लस आर प्लस प्लस किया तो वो मैक्स -1 पे पहुंच के रुक गया, क्योंकि 5 इज नॉट अ वैलिड इंडेक्स फॉर मी. 4 के बाद 5 जो है वो मेरे लिए वैलिड इंडेक्स नहीं था, तो मैं वहां पे रुक गया और मैंने बोल दिया क्यू इज फुल. बट इफ समहाउ 4 के बाद मैं वापस 0 पे अगर आ सकता हूं तो आगे जो खाली एलिमेंट है उसको भी यूज कर सकता हूं. अगर रियर को 4 के बाद मैं 0 बना दूं, देन आई कैन यूज इट. 0th इंडेक्स एलिमेंट आई कैन यूज टू स्टोर माय डेटा, एंड दैट्स व्हाट सर्कुलर क्यू सेज. You represent your array in a circle manner like this. So what you can do is something like you store few values like 1 2 3 4, right? Just like 1 2 3 and 4. Then if you want to delete your value 1, तो circle में से 1 जाएगा. If you want to delete 2, तो 2 जाएगा. Then you want to insert 5, okay, so 5 will go at index 4. Now you don't have any empty space here in a linear manner, but in a circle manner you can say you can store 6. So actually in a linear part 6 comes here at a 0th index. Now still you have one element empty, तो आप 7 भी store कर पाओगे. Well, in this case, where should be your front? At 3, value 3, and your rear at value 7. So this is where your front is and your rear is. Right? So value of front is 2, index is 2, and rear is 3. Rear is 1. Front is greater than rear in this case. Front is greater than rear in this case. तो सिंपल क्यू में ऐसा एक कंडीशन था, इफ फ्रंट बिकम्स ग्रेटर देन रियर योर क्यू इज एम्प्टी. लेकिन सर्कुलर क्यू में वो एम्प्टी नहीं होगा. सर्कुलर क्यू में फ्रंट कैन बिकम ग्रेटर देन रियर. That doesn't mean your circular queue is empty. Okay, तो ये याद रखोगे. That's the change in circular queue. Now anyway, we are going to update front and rear. प्लस 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 ही होंगे. माइनस माइनस होगा कभी? लोग 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, प्लस प्लस हुआ.
4 से 0 लाने के लिए कुछ अलग से लिख लूंगा, मैं माइनस माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि 4 से माइनस माइनस किया तो 3 पे आएगा, इट वॉन्ट कम एट 0, मुझे 0 पे लाना है। तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन बना के मैं कर दूंगा कि 4 के बाद 0 होना चाहिए, लेकिन अगेन 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, every time it is plus plus. So anyway, if you insert, you are going to make r plus plus. If you delete, you are going to make f plus plus. एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिखेंगे, अगर 4 है तो 0 होना चाहिए. Now in a circular manner, if you want to have something, then modulo operator will help you. Modulus. Any number modulo 5, क्या हो जाएगा? Your result will be within 0 to 4. 1 modulo 5, modulo मतलब reminder. 1 modulo 5, 1. 2 modulo 5, 2 modulus 5. સ્કૂલમાં મોકલી દઈશ બધાને પાછા. ભાગાકાર કરતા આવડે કે નહીં? 2 divided by 5, reminder is 2. So 2 modulo 5, 2. 3 modulo 5, 3. 4 modulo 5, 4. 5 modulo 5, 0. Correct. 5 modulo 5, 0. 6 modulo 5, 1. 6 divided by 5, reminder is 1. શેષ શું વધશે? હજી જો કોઈને સમજાતું ના હોય તો ગુજરાતી કહી દો. 6 divided by 5, reminder is 1. 7 divided by 5, 2. 8 divided by 5, reminder is 3. 9 divided by 5, reminder is 4. 10 divided by 5, back to 0. Back to 0. So modulus operator, the remainder, will give you that circular behavior. So when you do r plus plus, f plus plus, you always make modulo size. तो वो खुद ब खुद 4 के बाद 0 पे आ जाएगा. Excuse me. So we are going to make use of modulo operator here when we go for r plus plus, f plus plus. And that gives you the sneak peek, or at least a few somewhat idea about how we are going to maintain front and rear in insert and delete operation of circular Q. We'll stop here for now. In next lecture, we are going to see insert operation on a circular Q. Okay? Rohit is asking, will it affect the change operation index calculation? Yes, it will affect a little bit, minor. वहाँ पे भी modulo size आ जाएगा, and then validation of your index may change, will change. आपकी range बदल जाएगी, so वहाँ पे condition जो लिखेंगे वो देखना पड़ेगा हमें. Okay? So we will go through those operations in a next lecture. Thank you everyone. See you in the next lecture now. Bye-bye.